will you tell me how many of you are aware about JNU CEB? Everybody is aware JNU CEB. But beside this, a lot of university offering MSc degree in biotechnology, microbiology, or some applied sciences. That you know, like MS University Baroda conducting a specific test to get admission in MSc Medical Biotechnology, Biochemistry and Microbiology. And so far Gujarat is concerned, MS University Baroda is best. Okay. Then there is Nirma. Then some another university, that is so. But beside this, you can remember one more university, Agriculture University. There are 4 agriculture universities in Gujarat, as you all are aware, and they offer MSc degree in plant biotechnology and agriculture biotechnology, and you all are eligible. Not only BSc student, but BSc biotechnology, but BSc micro or botany zoology, everybody is eligible. So I will give you a brief overview about the techniques we are using in molecular biology and biotechnology, and that will be very important so far competitive examination is concerned, central level and state level. Sir. Welcome student in second lecture of today's session. He is Dr. Kundan Kumar Mishra and working as associate professor in NB Patel Science College. Basically, he did his BSc in zoology. Then he qualified the national level examination for plant biotechnology and MSc in plant biotechnology. Again, he qualified the national examination for a PhD and pursued PhD in a plant biotechnology. He has cleared CSIR NET exam, JRF, IER agriculture NET exam. He is qualified and is in this particular field of teaching from last 15 years. Many of you have seen the book which is available in our library, that is ABC of Biotechnology, which contain the multiple choice question, and there are 3 authors. One of the authors is Dr. Kundan Mishra. Sir, we have our college. I welcome you. Thank you very much for giving such a nice introduction. Although, as sir has said, myself and our colleague, we are continuously learning. Getting it? Learning never ends. Whether you are teacher, whether you are students, or whatever. Getting it? So if you will make the habit of learning continuously, you will be successful in future, whatever field you are going to choose. Okay, so before I start molecular techniques basic concept, let me tell you, if you want to deal with any macromolecules, do you know macromolecules? Do you have any idea? You all are comfortable in English or not? Yes. Although my English is not so good, let me tell you, but not bad. It's average. So, are you aware about macromolecules? Do you know macromolecules? Yeah, very good. But so far a student of molecular biology or biotechnology is concerned, we are more interested towards nucleic acid, that is DNA, RNA, and protein. Okay? So, if you want to deal with these macromolecules, you must have sound knowledge of molecular biology and techniques. Molecular biology and techniques. So far molecular biology is concerned, you are very much aware about DNA and RNA, but many things that you will learn later on that will come new. For example, if I will talk about DNA, and if I said if DNA is not duplex, or if DNA has not hydrogen bond, what will happen? Which type of particular process of central dogma will not possible? What you will answer? मेरी बात समझ रहे हैं आप? मान लीजिए मैं ऐसा कहूँ कि डीएनए डबल हेलिक्स नहीं होता या डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, तो सेंट्रल डॉगमा पे क्या इफेक्ट होता? और वेरी गुड, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता और पार्डन, ठीक बोल रहे हो, डीनेचुरेशन नहीं होगा
तो रेप्लिकेशन का पॉसिबिलिटी है ही नहीं, और अगर रेप्लिकेशन नहीं है तो नए डीएनए बनेंगे ही नहीं, नए डीएनए नहीं बनेंगे तो आरएनए भी नहीं बनेंगे, क्योंकि आरएनए को अटैचमेंट के लिए क्या चाहिए, डुप्लेक्स स्ट्रक्चर, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड फ्लेक्सिबल होना चाहिए। So you will have to think in that way. Competitive examination से straight forward question नहीं आते, आपको ऐसे क्वेश्चन का प्रिपरेशन करना है या सोचना है जो अप्लाइड हो, एंड इफ यू विल अप्लाई योर ब्रेन तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं ये बात है। So far this molecular technique is concerned, around 50 or 52 molecular techniques are well known, लेकिन आपके सिलेबस में 7-8 ऐसे हैं जो आपको जानना चाहिए, और उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें नहीं जाननी है, अप्लाइड जाननी है, एंड दैट थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस, गेटिंग इट। तो यही अपन बात करेंगे इसमें। I have divided my presentation in 2 parts. First presentation will deal preparation, analysis and manipulation of nucleic acid, and another will be protein. First we will learn those techniques which will be responsible for preparation, analysis and manipulation of nucleic acid. Means entire genetic engineering will be there. Okay? What is genetic engineering? Important. In competitive examination you will find one question, definition से ही आता है. What do you mean by genetic engineering? You try to speak, don't worry. Take it easy. Now if you want to define it in scientific way, the definition is so big, बहुत लंबा definition है, and that was given by Smith in 1996, well accepted. लेकिन उतना बड़ा definition अगर मैं बोलूँगा तो तुमको लगेगा ये क्या है, फिर भी मैं बोलता हूँ और उसका short form भी बोलता हूँ. According to Smith, what he says, the formation of new combination of heritable material by insertion of nucleic acid molecules produced by whatever means outside the cell into any virus, bacterial plasmid or other vector system, so as to allow their incorporation into the host organism, in which they do not naturally occur but in which they are capable of continued propagation. And this is big one. Yeah, genetic engineering and recombinant DNA are interrelated. But in short, what you will say, इतना बड़ा definition बोलने की जरूरत हर समय नहीं है. Introducing new and different gene into the host. आप इसको लिखो. Introducing genetic engineering का most precise, जो देखोगे JNU में एक बार आया भी है, introducing new and different genes. Introducing new and different genes into the host. And if you are going to do this, you must have sound concept of molecular techniques. बिना इसका possible है ही नहीं. कुछ genetic engineering या RDNA टेक्नोलॉजी के बारे में अपन बात नहीं कर सकते unless until you know the tools and technique of molecular biology. और इसीलिए ये दोनों important माना गया है. Central dogma of molecular biology and molecular techniques both are interlinked. Analysis करनी है तो knowledge चाहिए, और इसी में अपन ये 3 चीज को फोकस करेंगे, प्रिपरेशन, एनालिसिस एंड मैनिपुलेशन. अब देखो, एक्चुअली दिस टेक्निक आल्सो डील्स कि हाउ एंड व्हेन इट डेवलप एंड व्हाट इंफॉर्मेशन इट्स रिवीलिंग. ऐसा नहीं है, ये 3 टेक्निक नहीं है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि मॉलिक्यूलर टेक्निक्स आपको क्या बताएगा कि किस चीज के साथ आप डील कर रहे हो और उससे क्या आपको मिल रहा है. फॉर एग्जांपल, if you will talk about hybridization, so hybridization how can you define hybridization? So pairing of 2 polynucleotide often from different sources. Our aim is to identify some of the sequences in given sample. How? By formation of hydrogen bond between similar type of single strand of DNA. What it indicates and what it tells? It tells how denaturation and renaturation occurs, how specific DNA molecules used for identification of unknown sample, means you will know how to prepare radioactive probe or non-radioactive probe. Besides this, you will know how to transfer DNA molecules from agarose gel to nylon and nitrocellulose membrane for immobilization. And if you will learn the immobilization,
then you are able to locate the position of particular DNA sequences in particular sample. So एक hybridization आपको ये 4-5 बातें सिखा जाता है. So molecular techniques आप देखो कि कैसे important है. दूसरा, if you want to know cloning, can you tell me cloning? You try to interact me, don't listen. आपको अगर लगता है कि अपन कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं या तेज बोल रहे हैं तो अपन को रोको, या कुछ पूछना हो तो भी रोको, तभी पढ़ने का मजा है. तो क्लोनिंग को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट्स योर नेम? महिमा. बताओ महिमा, कैसे क्लोनिंग को डिफाइन करोगे? Okay, you are right. Anybody else? Anybody else? आप अपना ब्रेन अप्लाई करो. Don't go for book's definition. You are right. But अपन बोलेंगे what is cloning? तो basically अपन कह सकते हैं कि cloning is a process of getting the clone. अरे cloning क्या है? एक टेक्निक है, प्रोसेस है. So cloning is a process of getting the clone. Then what is clone? एक इंट्रोगेशन साइन आता है. हाँ, a large number of cells or molecules or organisms which are originally identical to their parental ancestral cells or molecules or organisms. So if you want to perform cloning, आपको 3-4 टेक्निक आनी पड़ेगी. How to isolate DNA, how to cut DNA, how to make rDNA, how to manipulate and how to screen. So आप इसके अंदर देखिए ये क्या सिखाता है क्लोनिंग. ये 5-7 टेक्निक को डायरेक्ट सिखाता है. अगर आपको ये सीखना है तो उसकी प्रॉपर्टीज भी आपको जाननी पड़ेगी. हालांकि क्लोनिंग के 3 टाइप हैं, डीएनए क्लोनिंग और जीन क्लोनिंग, सेल क्लोनिंग और थेराप्यूटिक क्लोनिंग, और ऑर्गेनिजम्स और रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग. लेकिन क्लोनिंग तो अभी अपन बात नहीं कर रहे हैं, बट मैं कह रहा हूँ कि टेक्निक क्या बता रहा है. One technique will tell you so many aspects of molecular biology or biotechnology. Okay? और जहाँ बायोलॉजी आएगा वहाँ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या मॉलिक्यूलर टेक्निक्स तो आएगा ही. नाउ थर्ड वन तुम देख लो, ऐसे ही मैंने रखा है पीसीआर. सो पीसीआर इज नॉट न्यू फॉर यू, बट बिकॉज ऑफ पीसीआर वी कम टू नो अबाउट in vitro amplification properties of DNA as well as some of the temperature resistance enzyme which can work best at 94, and even their enzymatic activity do not destroy if you will raise the temperature up to 100 degrees C. Means this technique tells how DNA multiply in vitro condition and what properties DNA has and why it multiply. So principal properties सब के बारे में molecular techniques बताता है, और इसीलिए if you have sound knowledge of molecular technique तो you can attempt 3 to 10 question in every competitive examination. Minimum 3 और maximum 10 की मैं गारंटी लेता हूँ. तुम किसी भी entrance में अपेयर हो जाओ तो minimum 3 और maximum 10 question इस part से आएंगे ही आएंगे. Okay? So now let us start molecular techniques. That was introductory part. Are you getting it or not? Everything. First we will see separation of nucleic acid. Although you already studied it, but we will discuss those aspects which are important so far competitive examination is concerned. Then we will see how to cut DNA at a specific site. You know, cutting of DNA is not difficult task. DNA में कितने bonds होते हैं? और वंडर बॉल्स किसने कहा? कहाँ पे होता है वंडर बॉल्स? चलिए आपने कहा, कुछ नया लगा मुझे. डीएनए में अपन को 3 बॉन्ड से ज्यादा मतलब है. फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इज रिस्पांसिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए. यू आर राइट. डीएनए इज मोर स्टेबल बिकॉज इट हैज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन. वाटर हैटिंग जो भी होगा दैट विल बी स्टेबल, एंड वाटर लविंग जो होगा वो अनस्टेबल. आरएनए में एक OH ग्रुप होता है 2 कार्बन एटम पे, इसीलिए आरएनए कैन हाइड्रोलाइज एंड डिग्रेड इजीली.
as compared to DNA. So hydrophobic interaction is responsible for what? Stability. But यहाँ bond के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ, that is 3 से अपन को ज़्यादा मतलब है. One is phosphodiester bond, which will be present in between phosphate and sugar, जो आप जानते होंगे. दूसरा होता है सुगर और बेस के बीच में what we call normal glycosidic bond. और तीसरा होता है बेस के बीच में, जिसको अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड. ये 3 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि whatever enzymes we are going to use, that will be only act on phosphodiester bond. कट करना है कोई भी enzymes लो, whether restriction enzyme, that I will come later on, or you can use any exo or endonuclease, like DNA is 1, exonuclease 3rd. इसको देखना है आपको, एग्जाम में पूछता है. तो target will be phosphodiester bond, and if you want to join 2 DNA fragments together, प्लाज्मिड का नाम सुना है तो आपको पता होगा कि प्लाज्मिड कैन यूज एज ए वेक्टर. और जब भी अपन को rDNA कंस्ट्रक्ट करना है तो we will have to cut plasmid at multiple cloning site and insert gene of interest and then add DNA ligase. So what DNA ligase will do? It will make phosphodiester bond. तो अपन को phosphodiester bond को सबसे ज्यादा याद रखना है. क्यों मैं कह रहा हूँ? कभी-कभी आता है which of the following enzyme can cut phosphodiester bond? So answer will be all endonuclease. अगर आपको दिमाग में ये नहीं आता है कि कौन सा एंजाइम है, लेकिन अगर ये दिमाग में आता है कि इट्स इंडोन्यूक्लियस, तो कोई भी इंडोन्यूक्लियस ऑप्शन में वो सही हो जाएगा. और कौन ज्वाइन करेगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को? तो लाइगेज, चाहे वो T4 हो या T7 हो या ई कोलाई कोडेड हो या व्हाटएवर हो. तो आपको क्या एक कॉन्सेप्ट लेके चलना है बस. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को टारगेट करना किसी भी एंजाइम से पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपन एसिड वगैरह से करते हैं. दैट वी विल सी लेटर ऑन. देखो ऐसा क्वेश्चन आता है कि सपोज वी हैव डीएनए एंड यू विल ऐड एसिड. डीएनए है आपके पास, आप एसिड डाल दोगे, व्हाट विल हैपन? आईएससी का क्वेश्चन है. नाउ यू हैव डीएनए विद यू इन वन ट्यूब and you added acid